afternoon. This is Rahul here. First of all, I want to say that it's a wonderful session, and I'm getting very insightful knowledge from you all. And I really thank you for giving this opportunity to be in this session. I just want to ask that we all have a work pressure. It might be due to multitasking or whichever, maybe we get a lot of work pressure. But especially when you're working in a startup firm, the work pressure will be more because you don't have a proper system and you don't know what is coming next. So, how do you handle such kind of work pressure? Because it will also lead to anxiety, stress, depression, lot of things it may come, especially when you are an entrepreneur. So, again, the stress level will be more. So, how do you handle this? Thank you. So starting with I think Banda first. Hey Rahul, it's nice to see you here and thank you for that question. Yes, as you said, the pressure might be more, and so when it comes to startups, I believe that initially we don't have a robust structure. और जो structure होता है किसी भी चीज में, when there is a structure involved, it kind of takes care of how things have to move, and it takes off that pressure from you. That what am I supposed to do? What comes next? So there is a complete clear route in an established organization as compared to a startup. A lot of times startups can also start there, but most of the times, entrepreneurs do face these issues that they do not know how to put that structure in place. So that can bring in a lot of anxiety and a lot of overwhelm because there's so many things to be taken care of. But being a part of that race myself, or being a part of that tribe myself, um, it all comes down to your core understanding of why you started in the first place. What is it that made you join that startup? What mission is it that you're trying to venture into and cater to? Because that's what is going to give you the momentum to keep going. There could be anything. Take for example a baby who's born. Take the first 3 years of their life. So much of growth. Utana, that amount of growth never happens later. Every single day. One of my friends just gave birth to a baby, and doctors are already saying that, in 3 days she has grown, give her more milk. So imagine that day by day you're growing. So it's true for a startup. Day by day it's going to grow, and there's going to be more that's needed. But that's what we need to know when we start. That initial first few years, give it a 3 years time. It's going to take a lot from you. You need to know what you need to maintain that sanity of yours. Like, how do you ground yourself? What are those points for you? Like for me, for example, if it that I need my alone time, no matter what, it's a given that every day I need my alone time, I need my me time. It could be something else for you. For someone it could be ki, I know I need a time with my family, I need to have at least my dinner with my family. Whatever it is for you, you need to know that I need to have those components in my day which ground me and give me strength, help me re-energize, so that tomorrow I go and put all of that again, all over again. So first is acceptance that a startup will take time to. It's like it might like a bamboo shoot. You keep doing, and 5 years later you see like a bamboo shoot come up, rise up completely high. So you might not see something in the beginning, or you might see a little spot, but then it's going to shoot. That tipping point is going to come, and you don't know when it's going to come, but till then you have to hold on and keep doing your bit. So grounding, I'll say, grounding yourself to the bits that re-energize you, to keep you going till you reach that point. And then, as Anamika had shared earlier in the session, that a lot of times we are afraid of success. How will it be? When I'll be more successful, I'll probably have to do more work, and there's going to be a bigger team coming up. So we think that the overwhelm is going to reduce. No, this is our preparation. We are actually now understanding and preparing ourselves to take higher overwhelm and be able to manage ourselves during that time later. So that's what I feel is how an entrepreneur's journey looks like. And maybe Anamika might be able to add there more. So, no, I totally agree. Thanks, Rahul, for asking that question. I can actually absolutely relate to what you said because that's how it is for us too. I mean, it's an entrepreneur's journey is it has many ups and downs, and there are so many things. I mean, something unplanned comes.
which you're not expected, and you don't know every other day something this or that comes. How I do it, I'll share my own thing. So during the day, first of all, like what Vandana said, the why. Okay, why you started it. Okay, why, how it makes your life so beautiful and how it helps you achieve your life's purpose. It can be anything. For everybody, it's different. For maybe me and Vandana, ours is like to empower people or inspire people or help them see their parts and live a better life. For you, it could be maybe creating a good team, anything. Why? What's your why? So when you're at work, never forget your why, but decide a time for yourself that these 8 hours, 9 hours, this is what I do. This is my work time. And then, like, even I don't work for 8 hours, I work for 4 or 5 hours a day. And then I do it, and then I do it in bits and pieces during the day. And when I'm working, I enjoy it. It doesn't even feel like work at times because there's so much creativity involved, people whom I love, I like. So it just goes on. So you keep creating things for yourself, small things, that when you go for lunch, maybe you can take breaks, maybe you can, create a culture in the office where people can, do things in a way that the culture is very good and happy. Okay, I'm not saying it will not be stressed. Stress is always going to be there. Okay, because it is there. It's just a part and parcel of the process. But you learn to manage it, and it's not going to come down. It's just a preparation, like Varna said. So it's always gonna be there. It's just now you'll be more ready to take more and more stress. So manage your day in a way. Maybe when you go back to sleep, like when I go back to sleep, I keep away everything and I decide that these 8 hours, when I meditate, I sit, I get up and meditate again, and I just lie down. It's just me, okay? 8 hours, just me with myself. That's it. Like me time. Okay, that is important. And then select your people whom you with whom you enjoy, and plan your day. Life is not just, I mean, life is, of course, about finding our purpose and fulfilling it. But how would you do it if you yourself are not enjoying your life? Okay, so put something in your life which you enjoy a lot, doing a lot. And that is what I like to do. I put certain things which I enjoy a lot. So then when I come to the other part, because obviously being an entrepreneur, you have to be everything. It's not just like you sit in a computer and prepare a software. You have to do all your tasks. You have to work for 10 different roles. That's what an entrepreneur is. So there will be things you like, there will be things you don't like. Okay. So you'll still be doing those things because you really want to do it. But for that, you can manage it with other things in life which you find good and happy, which you find your happiness in. That's all from my side. Sanjay ji, Ronak, anything to add, please? Yeah, just one thing I'd like to ask Rahul. What exactly is the nature of your startup? So we are into the electrical consultant. No, what in what? Since I'm an electrical engineer, I can ask you more about it. What Okay. exactly is your domain? So see, we used to take up the turnkey projects for automobile industries, or maybe more commercial and non-commercial sectors, you can see. So we used to take up complete turnkey projects and retrofit works. So we used to take up that activities, as well as we also used to take up AMC projects as well. Okay. So, well, as far as the say startup in automobile sector goes, if you see right now, there is a big revolution coming up in automobile industry, and that's with the electric vehicles. And you see, like, I don't know how much you are into it, but if you see that this automobile industry is poised for a flight mode, like from rather than being on the ground, it's poised for the say flight mode, and there are a lot many opportunities. So what I would suggest, in a practical way, is that, as Vandana also said, since she's also worked in an enterprise,
And since I also have worked for 37 years in an enterprise, you need to get a proper system in place, and you need to have an analysis of the market. You need to find, as a startup, since you are starting in a particular sort of niche business, you need to find where is your niche, what is the slot where you have your strengths, and try to capitalize on that. And as Vanda said, it's like a child growing, and you take baby steps. And as a baby first learns to crawl, then he learns to walk in a shaky manner, and then he takes steps, and then he begins to run. So it's all up to you. Like, I'm just speaking from the say non-emotional angle, but from the practical angle, you need to find, as a startup, where is your niche, what is the market scenario, build up a system so that you get a resilient system in place, and then work ahead with confidence in yourself. Am I making sense to you? Yes, it's really making a lot of sense. Okay, thank you. Thank you, thank you. Hope that we were able to answer you. And basically, I wanted to add one point जो बंदा ने भी कवर किया और संजय सर ने भी कवर किया, that startup or entrepreneurship journey is just like nurturing a baby, because you like or don't like the aspects, different aspects, but you have to nurture it because it's your baby. So that's what I feel, and that's how I even growing my startup. Okay, so that's what is the core of that particular journey. So Yeah, I'll just like to add one more aspect to it, Rahul. What happens is we all have certain dominant styles. All of us are born with certain traits that are dominant in us, and there are a lot of assessments and things available which you can find. What are your natural strengths? Like, are you more of a collaborator? Are you more of a direct person or a dominating person? Or, and I'm not saying in a negative sense, but something that stands, like that's the natural energy that you have. So identifying things that are naturally aligned to your style, taking up them and gaining the momentum, and then finding systems or delegation of the things that don't naturally come to you. So you might, a lot of times as entrepreneurs, we or as startup people, we want to do everything on our own, and knowing that we don't have to do everything on our own. There might, if we can delegate it in a way to someone whom we can trust and make a part of our team, and how do you find those tasks that can be dedicated and still keep you moving? That's another aspect, very important aspect of it, that you should know, or you must try and get curious about what my natural styles are that help me gain momentum. So I have those activities in my day which help me move fast, and then there are those which I know I'm not naturally aligned to, but I still have to probably do them. I know it's going to take more time and energy from me, so let me allocate accordingly. Let me allocate enough time to it, or maybe let me gain some help for it. So that's Yeah, another way of proceeding with it. yeah, right. I agree with you because getting a good team and having a similar vision, same vision is more important. And this is where the most of the startup stuck. Yeah, that's right. Yeah, it takes time. It takes time, and it's okay to have people who are not aligned, find new people. But as far as somebody who's the core of it knows that they have to keep going. You will find those. You will attract those kind of people who align with your mission. so Exactly. Thank you. Thank you, definitely Rahul. now moving ahead. So basically we are I think moving ahead of the time basically. So coming to the last part of the question, that is there were basically two questions in the last, and first question is that with the blind race of achieving more and more numbers, basically जो हम प्रेशर जिस टर्म में हम बात करते हैं नेगेटिव सेंस में, कि जहाँ नंबर्स ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड होते जाते हैं वहाँ प्रेशर बढ़ता जाता है. So somewhere we are missing the impact part or the productivity part. That is my what I can say the question to discuss or explore. So I think starting from Banna first. Um, so if I understand your question correctly, Ronaldji, that you're saying that if we are chasing the numbers, we are missing on the productivity. Yeah, we are missing the Uh, impact. Basically if I will Impact. yeah, basically if I will relate with the example, so what is happening basically, जैसे हम initially बात कर रहे थे मार्क्स की, कि हम 90% क्यों नहीं आए, 80% क्यों नहीं आए, 100% क्यों नहीं आए, है ना. So basically 90% 100% मार्क्स अगर हम चेज कर लो, that could be done
आई थिंक वन नाइट बिफोर द एग्जाम आप एक रात पहले पढ़िए, एक हफ्ते पहले पढ़िए, एक महीने पहले पढ़िए, दैट वुड बी पॉसिबल कि आपके 90% 80% मार्क्स आ जाएंगे. बट इफ आई विल से यू दैट फॉर एग्जाम्पल आपको कितना याद है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, या फॉर एग्जाम्पल आप कितना क्रिएट कर सकते हैं आउट ऑफ द लर्निंग्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर subject or experience or activity, whatever it is. So when it comes to impact part, वो कहीं ना कहीं what I believe कि वो कहीं ना कहीं लैग कर रहा है just to increase the numbers, just to increase कि हम ज़्यादा से ज़्यादा customers, ज़्यादा से ज़्यादा clients attract कर लें, so that कि business grow कर जाए. And there could be multiple aspects or different aspects of this particular Sure. question, but important is कि somewhere we are missing the impact part. Yes. Yes, so I agree with you when you said that when we are chasing numbers, when we are only chasing numbers, we miss out on, what experience we want to bring forward, what we want to keep. Like I'll take my own example. I was a very good student. I always had good numbers, but and I always got good grades. So was not my husband also got good grades, but not as much as I did. But he remembers way more of the concepts than I do, to the point that what you just said. Numbers do not reflect your understanding of the concept. Numbers mean I've just cracked a way of getting more numbers. I just somehow know what kind of answers, what format of answers am I supposed to write so that I'm going to get the numbers. So this doesn't really say, how well you understood the concept. Given that, I think it's not, it's not a bad thing also to chase numbers at the same time. It's having that goal. सो गोल है, बट उसके पीछे आप पागलों जैसे नहीं भाग रहे हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है आप कर क्या रहे हैं, और आपको अब बस नंबर के पीछे भाग रहे हैं. जैसे जैसे अगर आपके ज्यादा क्लाइंट्स हैं एक बिजनेस में, एक स्टार्टअप में, अगर आपके ज्यादा एंगेजमेंट्स है, आपके ज्यादा क्लाइंट्स है, इट्स समवेयर ऑफ कोर्स आल्सो सेज दैट दे आर ट्रस्टिंग यू. They are trusting you, they are reaching out to you, so there is a feedback that you're getting. At the same time, it doesn't mean that if someone is there with less number of clients, that doesn't mean that they're not doing a good work. They might be taking, their project model might be different. Probably their clients are with them for 100 years, or like ongoing, or 10, long lasting relationship. So ultimately what we need to focus on is, if I'm chasing numbers, what is my intent behind it? Knowing ultimately it comes down to knowing why this number is important for me. जैसे अगर मैं फिर से अपना एग्जांपल दूंगी, मेरा मतलब शुरू में था जब मैंने अपना काम शुरू किया ये कोचिंग वाला बिजनेस, कि मैं बस हैप्पी गो लकी हूं, आई एम जस्ट डूइंग इट लाइक अ हॉबी. I was doing it like, and I did it because I loved doing it. I know I would show up every day. I would do what I do, but I was pursuing it as a hobby. कि जो आए सो आए, नहीं आए सो नहीं आए, ठीक है, मैं तो अपना काम करते रहूंगी, ठीक है. बट कल को मुझे सस्टेनेबल बिजनेस बनाना है, मेरे टीम में लोग हैं, मुझे उनको पे करना है. आई नीड टू नो मुझे कितने लीड्स जनरेट करने हैं, मुझे कितने मैसेजेस पोस्ट करने हैं, मुझे कितने लोगों के साथ वन ऑन वन करनी है. अगर मेरे पास वो बेंचमार्क्स नहीं है, तो मैं वो गोल कैसे अचीव करूंगी, और मैं कैसे प्रॉमिस कर पाऊंगी अपने टीम को. सो सेम इज ट्रू फॉर, आई वुड से, फॉर किड्स और फॉर यूथ टुडे. इफ यू वांट टू चेज नंबर्स, एंड अगेन आई विल से, पहले से बोलते थे कि 60% इनफ था, बट तब के लिए 60% was like today's 90% or 99%. It was a big thing to get that mark, those amount of marks. उसके बाद जब सेकंड जनरेशन आई, जब नंबर, तो जैसे रुपी का, आप पैसे का मोल देखो, पैसे का मोल जो पहले था और आज है. पहले 100 रुपए के कितनी कदर थी, आज 100 रुपए 10 रुपए जैसे हो चुका है. इट्स द सेम विथ मार्क्स. So the competition always existed and it will continue to exist. But again, what is important for you? If I need to become a student in IIM, किसी का aim हो सकता है, not because someone else has told me. मेरे खुद की intention है कि मुझे IIM में जाना है, तो मुझे तो उतने कैट में स्कोर लाना पड़ेगा ना, उस एग्जाम में मुझे स्कोर लाना ही पड़ेगा, तभी मेरा एडमिशन होगा. इट्स अ हार्ड फैक्ट. If I just look at it like fact, and I know why I'm chasing numbers, I think that's what matters. Don't chase it unconsciously. Do it consciously. It's okay to be a part of it, but do it consciously and know that अगर आपने वो चीज नहीं अचीव की, it's not the end of the world. आपने वो चीज नहीं अचीव की, बट आप उसके चेज में जो बन गए हो ना आज, जो हैबिट्स आपने उसके चेज में इंस्टिल की अपने आप में, वो आपके साथ तो लाइफ लॉन्ग रहने वाली है.
और जब मुश्किलें और आएंगी आगे चल के, ये हैबिट्स ही आपको बचाएंगी। जो आपने देखा कि मैंने कितने कंसिस्टेंटली परसिस्टेंटली मुश्किलों के बाद भी मैंने फॉलो किया, आई केम आउट ऑफ दैट, आई डिड अगेन, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बिल्ड योर रेजिलियंस एंड गिव यू मोर स्ट्रेंथ लेटर। सो नथिंग एवर गोज वेस्ट। ये सब लोगों से मैं मतलब आई अर्ज एवरीवन टू बिलीव दिस एंड स्टार्ट बिलीविंग। इफ यू आर नॉट, nothing goes for a waste. Everything will be useful, everything is useful, it is shaping you into who you are, the good and the bad part of the journey, everything is shaping you into who you are today, and from what you have today you can create a tomorrow. So that's okay, go ahead, chase whatever you want to chase, but chase it consciously, knowing why you're doing what you're doing. That's what I like to say. Over to you, Anamika. No, Vandana, I mean, you said it like with so much clarity. I would say the same thing that, having, like, when we talk about a vision statement or a mission statement or maybe goals and objectives of doing the business, or it can be anything. It's like, it's not just about a company, it's not just about startups. Even हमारे personal विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सब कुछ होते हैं लाइफ में। तो हमें हमारा विजन इज लाइक व्हाई आर वी डूइंग व्हाट वी आर डूइंग। जैसे थोड़े दिन पहले मैं एक क्लाइंट से बात कर रही थी, तो he makes it is a very young guy but he's making a lot of money. Okay, he is an IIT graduate and he's making a lot of money, and he's like, I am doing this with my money, I'm doing this with my money, I'm from a very rich family. So I'm like, okay, good. Then he's like, I'm accumulating all my wealth. And I'm like, okay, fine. Why are you doing that? I understand you have a package of 30 lakhs per annum and everything. Why are you doing that? He's like, I don't know. I just like to see my numbers grow. Right. So that is such a shallow understanding of life. Okay, उसको अपनी लाइफ का वाई नहीं पता कि वो जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, उसको भी नहीं पता। He doesn't know कि if he accumulates 5 crore rupees, let's suppose by the age of 35 or 30 or whatever, उसको नहीं पता कि उसको उस पैसे के साथ करना क्या है। So there's no use of such money, right? How are you going to use that money? So it can be anything. It can be literally anything. That why can be different things. There are people who are thinking of getting this thing or that thing, or ठीक है, जो भी है हमारा जो स्टेट है, जिस एज में भी हम हैं, चाहे हम 15 साल के हैं, 20 साल के हैं, 30, उस एज के हिसाब से जो भी हमारी एज है, हमारा जो वाई है कि वाई वी आर डूइंग, मैं इस मोमेंट को जिस तरीके से जी रहा हूँ, क्यों जी रहा हूँ, दैट वी शुड नो। देन हमारे गोल्स हो सकते हैं। उस चीज को जीने के लिए हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। मैं इस घर पे अगर बैठी हूँ, इफ आई एम, लेट्स सपोज आई बाय दिस हाउस और आई पे द रेंट, मुझे वो रेंट देने के लिए I'll need money, right? And I'll have to see कि these are my monthly expenditures. This is my income. Okay, this much I'll save, and it can be anything. So goals and objectives are something which help your mission to grow. Your mission is the what and the how you're going to do it, what you're going to do. Let's suppose my mission is to impact 10 lakh people in next 10 years. Let's suppose कि मुझे 10 लाख लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट लाना है। वो इम्पैक्ट मैं कैसे लाऊंगी? ओके, तो मुझे मेरा क्यों पता चल गया, वाई आई नो कि मुझे क्या करना है। ओके, अब मुझे उसके लिए रिसोर्सेज भी तो लगेंगे, ठीक है? मुझे उसके लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है, अब मैं बोलूंगी कि नहीं नंबर्स इंपॉर्टेंट, नंबर्स आर इम्पोर्टेंट, फाइन, बट वो सब कुछ नहीं है, ठीक है? तो हमें बस ये अवेयरनेस होनी जरूरी है कि कब नंबर्स कितने, नॉट गेटिंग ऑब्सेस्ड विद नंबर्स। हमें नंबर्स बनना नहीं है, हमें बन नहीं जाना है, जबकि वो नंबर्स तो सिर्फ जरिया है हमारा जो लाइफ का विजन है उसको अचीव करने के। तो एज अ जरिया यूज करना है, एज अ टूल यूज करना है, ठीक है? तो नंबर्स आर नॉट बैड, दे आर जस्ट टूल्स, दे आर नॉट यू आर नॉट नंबर्स। तो बस ये चीज अगर पता चल जाए कि हाँ वो है तो है, फाइन। अब जो चीज हो गई उसके लिए, जो हो चुका है वो तो पास्ट में है। अगर कभी हम फेल भी से क्या सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? लाइफ इज ऑल अबाउट दैट। सो नॉट कंसीडरिंग थिंग्स एज गुड एंड बैड, बट जस्ट बीइंग अवेयर कि
हमें क्यों जो चीज़ हम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और क्या हम ऑब्सेस हो रहे हैं नंबर्स के पीछे? क्या मिलेगा हमें? बहुत ज़रूरी है ये क्वेश्चन पूछना कि हम ऑब्सेस तो हो जाते हैं नंबर्स से कि मुझे 10,000 सोशल मीडिया फॉलोअर्स चाहिए, बट हमें एक्चुअली पूछने की ज़रूरत है कि हमें जो खुशी मिलती है वो 10,000 फॉलोअर्स से मिल रही है, या फिर हम अपने किसी फ्रेंड के साथ बैठ के एक 1 घंटे बात कर लेते हैं तो खुशी मिल जाती है। हमें खुशी ही समझ में नहीं आती है, क्योंकि हमने वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सब कुछ क्रिएट कर लिया है, उससे मिलेगी, और फिर नहीं मिलती है, फिर हम परेशान हो जाते हैं, क्यों नहीं मिल रही है, राइट? क्यों नहीं मिल रही है? तो शायद 20,000 फॉलोअर्स से मिलेगी, फिर वो मिलने के बाद भी नहीं मिलती, फिर लगता है 1 लाख से मिल जाएगी। तो इट्स ऑलवेज चेजिंग। तो इम्पैक्ट को तो हम भूल ही गए हैं, राइट? कि क्या है हम जो कर रहे हैं इस मोमेंट में, क्यों कर रहे हैं? दैट इज वाई इट्स इम्पोर्टेंट, जैसे वंदना ने बोला, कि सब कुछ करो कॉन्शियसली, ज्यादा अवेयरनेस के साथ, ठीक है? अवेयरनेस, और बाहर की अवेयरनेस नहीं, अपने आप की अवेयरनेस, कि सेल्फ अवेयरनेस, क्योंकि अवेयरनेस इटसेल्फ अधूरा रह जाता है, सेल्फ अवेयरनेस। अपने आप की अवेयरनेस होगी, एवरीथिंग एल्स विल फॉल इनटू प्लेस। फिर नंबर्स होंगे भी, नंबर्स बहुत सारे हो जाएंगे, बट फिर भी कि चाहे वो नंबर्स कितने भी हो, 10,000 हो, 10 lakhs हो, you're okay with it, because आप फिर भी अपनी लाइफ में you're flowing. Yeah, that's all. So, sir wants to add something. I just want to really appreciate what Vanna said. She has a very good understanding of things. And again, like say real life statements, if you have seen like एक बांस होता है और एक लठ होता है. The difference is only lut is a solid piece of wood, which is solid inside and solid outside. It may be small in dia, whereas a bass may be much bigger in dia, but it's hollow inside. Now, what happened is that, in our age, we were chota lut, and now there is a mota bass. So, as you're saying that numbers are there, fine, because you have to focus on the dia. The numbers are the dia. तो अब dia तो बड़ा होता जा रहा है, लेकिन somehow unfortunately hollow होता जा रहा है. मार्क्स तो ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स कम आ रहे हैं. मैं ये देख रहा हूँ दिल्ली में हमारे DU में पहला कट ऑफ जो लिस्ट आया था 100% आया है, और 100% कट ऑफ इज इन 8 colleges and 15 subjects. Now where do you go from here? What Vanda says, I need numbers also, I need to go in CAT. My son got admission in IIM Lucknow with 99.73 CAT score in general category. Now where does he go from there? Numbers are also important, but ये बांस और लठ तो रहेगा boss. You cannot get out of it. And maybe that is the anomaly or the irony of our generation and your generation, that even today my son or my daughter-in-law or my grandson also, they ask me concepts in physics which I am able to tell them, but which perhaps they are not able to tell. So that difference is there, but we have to live in the present world, numbers being numbers. आप अपने बांस को बड़ा करिए डाया, अब लठ तो नहीं बन सकता भाई. एक और चीज मैं ऐड करूंगी सर ने जो बोला उसमें, कि हमारे टाइम पर ये YouTube पे सारे क्लासेस ऐसे अवेलेबल थोड़े ही थे. कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेनेशन वाले जो इन्फॉर्मेशन थी वो रेडिली अवेलेबल नहीं थी, हमें खुद समझ के यूज करना था. वी डिडंट हैव एनी एक्सटर्नल सोर्स, और दे वर जस्ट बुक्स दैट वी कुड रिलेट टू. आज की दुनिया में अगेन दैट्स अनदर थिंग कि दे हैव इट हैंडी. उनको पता है टीचर ने नहीं समझाया तो वो यूट्यूब पर ढूंढ के गूगल पे समझ लेंगे. अभी पेरेंट्स के पास भी ये कंफ्यूजन हो गया कि क्या वो उतनी अच्छे से समझा पाएंगे जितना अच्छा यूट्यूब ट्यूटोरियल अवेलेबल है. तो द ट्रस्ट दैट दे हैड ऑन द बुक्स, द टीचर्स, द फैमिलीज, इट्स ऑल आउटवर्ड्स नाउ, क्योंकि अवेलेबल है. तो इट्स मोर, earlier the need was to understand and implement. Now the need is to know where to resource the information from and utilize it. So the need itself has changed. पहले क्या जरूरत थी, अब क्या जरूरत है में भी बहुत फर्क आ गया है. So you have to be in sync with the times that are now. आज आपको क्या जरूरत है. दूसरी एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी कि पहले बहुत लिमिटेड प्रोफेशंस थे. ये चीज, जैसे कोचिंग इंडस्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, हमें तो पता ही नहीं थी कि ये कोई इंडस्ट्री भी है.
बट नाउ ये जनरेशन के पास ये बेनिफिट है कि यू कैन एक्सेल इन एनीथिंग एंड एवरीथिंग if you are ready to commit yourself to it. It's not that you have to become an engineer. You can earn as much by doing your own venture and having your own startup and all. तो उनको जो जो हमको एक थी कि हम घुस गए आईटी की दुनिया में, अब हम सेटल्ड है, अब हमारा ठीक है, हमारी लाइफ चल जाएगी. इनके पास इतने ऑप्शंस है कि अब नाउ टू फिगर आउट द ऑप्शन बिकम्स अनदर प्रेशर कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, और मैं कर जाऊं तो फिर वो इतनी यंग एज से ही इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, जैसे वो रेजिलियंस इतने बचपन से दिखाना, दैट दे नीड. So the generation needs different things, but again everything comes down to what do you want to do, and if you don't know what you want to do what is safe. Just start somewhere, get started, fail fast, just fail if till the time you find it, but just try it. करोगे नहीं तो नहीं पता लगेगा. बट यू हैव टू अनामिका ने भी जो मेंशन किया था कि वो क्वेश्चंस आपको अपने आप को पूछने पड़ेंगे. मुझे किस चीज में पसंद, मुझे किस चीज में खुशी मिलती है. संजय सर ने भी कहा कि हर चीज नहीं मिलेगी आपको, किस में आपको खुशी मिलती है वो ढूंढो और वो चीज करो, और जब तक नहीं मिलती उसको छोड़ो मत, ढूंढते रहो. एग्जैक्टली और मतलब सबसे पहली चीज तो एग्जाम्पल बहुत सही दिया संजय सर ने, जो मैं रिलेट कर पा रहा था. एंड इम्पॉर्टेंटली जो आपने कहा, फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब वीडियोस की बात है ना. So now the generation is like कि if they have missed 1 or 2 lectures or some portion, they are not, जैसे हम होते थे तो क्या करते थे, basically we are used to ask notes from the classmates or go to the teacher कि सर वो 2 lecture छूट गए, थोड़ा समझा दिए. They evenly openly ask me कि सर कोई YouTube वीडियो की लिंक होगी जिससे मुझे समझ में आएगा. And then I thought कि यार what I am doing here, if you don't know then just understand the concept, ask the doubts, definitely we can put efforts together to make you understand. Now they are asking that can you provide us the links of YouTube video or something kind from where we can understand. So मुझे लगता है जहाँ तक चीज़ें जितनी ईजी हो जाती हैं, जितनी कंफर्टेबल होती जाती हैं, वी वो जो कहते हैं कि हम मेहनत करना छोड़ देते हैं. We leave that part of working on ourselves more and more to progress. So that's how. और सबसे बड़ी चीज़ नंबर्स की जो मैं समझ रहा था आप लोगों के एक्सप्लेनेशन और एक्सप्लोरेशन से, कि समराइज अगर हम करें तो अगेन कम बैक टू दैट पॉइंट कि यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एग्जैक्टली व्हाट इम्पैक्ट यू आर गोइंग टू क्रिएट, एंड देन डेफिनेटली बाइफरगेट दैट इम्पैक्ट इनटू व्हाट आई कैन से द डिफरेंट नंबर्स, दैट for that kind of impact what numbers do you need exactly. not not beginning with the number should be at a later part. First identify that the impact what you want, what you want to create in the society, in the people, in the family, in your own life, and then definitely come with the numbers that for that particular impact. जैसे आपका example जैसे आप बता रहे थे कि if I need to go into the IIM Amritsar or IIM any IIM Ahmedabad, then I need to understand for that particular impact or for that particular achievement what numbers I should have, and by going into the IIM what kind of impact I wanted to create. So if that clarity is there, then chasing numbers is, I think that is good. And uh, uh, I'm looking at the clock as well. So if मतलब अगर मैं सोचूं तो it will be on keep on going and going and going. Was what I love the most is the kind of conversation we are going through. But definitely it's my I cannot say to end the conversation, but definitely because of the time constraints and the busyness of your what I can say the experts, we have to bind the session. So now coming to the conclusion part. So basically हर aspect पे basically what my last question was again कि इतना pressure है, सब कुछ है, तो हमें किस तरीके से improve करना चाहिए, और what should be our efforts to lower down that pressure or to understand or live with that pressure happily and successfully. So that was my particular last question. Basically हमने हर एक statement में, हर एक question में cover भी किया है वो aspects, but at the conclusion part I just wanted to from you to summarize this aspect, that if there is a pressure, then in short that what would be the steps to lower down that pressure and live life happily, beautifully, or what we can say. So that's, and starting from Anamika, no pressure there. Okay, okay. Okay. So अभी तो हमने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी कवर कर ली हैं, बहुत कुछ है भी नहीं मेरे पास अभी बोलने के लिए. प्रेशर यूजुअली एक तो नंबर से आता है, प्लस दूसरी चीज ये आता है कि हम लाइफ में हमेशा लाइफ को आउटकम से जोड़ देते हैं, या फिर कोई चीज पास्ट में खराब हो गई, लेट्स सपोज हम कभी फेल हो गए लाइफ में, वो अचीव नहीं कर पाए,
तो या तो हम उसमें घुस के ड्वेल करने लग जाते हैं, ये खराब हो गया, अब वी आइदर लूज कॉन्फिडेंस, या फिर हम जब फ्यूचर में वो चीज है कि ये करना है तो हम बहुत ज्यादा आउटकम से जोड़ लेते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो मेरी लाइफ खराब हो जाएगी। ओके, लाइफ चलती रहती है, हमें ये समझने की कोशिश है कि लाइफ इज अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। ठीक है, कहीं आपको पहुंचना नहीं है, वो जो जिस आउटकम से हम जोड़ के अपनी जिंदगी को खींचते रहते हैं, वो तो सिर्फ एक चौराहा है लाइफ का, जैसे हमें क्रॉस करके आगे जाना है। ठीक है, तो अपने आप को प्रेशर तो रहेगा, आपको करना भी है सारी चीजें, और आपको इस मोमेंट में अपने आप को पुश करने के लिए थोड़ा प्रेशर इज ओके, बट कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इस मोमेंट में, क्योंकि इसी मोमेंट से तो वो आउटकम अचीव होगा, राइट? ऐसा तो नहीं है कि हम फ्यूचर का सोचते रहेंगे तो आउटकम अचीव करना तो इसी मोमेंट में है। तो जितना हम माइंडफुल हो सकते हैं इस मोमेंट में, मुझे ये मेरे कंट्रोल में है, आउटकम मेरे कंट्रोल में नहीं है, जो मेरे कंट्रोल में है मैं इस मोमेंट पे ये करता हूँ और फिर छोड़ देता हूँ। जो होना है फिर वो आउटकम जो आएगा बढ़िया है, फिर देखेंगे, फिर अच्छा आएगा बुरा आएगा जैसा भी आएगा, उससे क्या सीखना है उस मोमेंट पे जब पहुंचेंगे तो वो फिर प्रेजेंट है, फिर उसको उस तरीके से लेके आगे बढ़ेंगे। तो जितना हम प्रेजेंट में जीते हैं तो हम लाइफ को बहुत फुली एंजॉय कर पाते हैं, और हम इस मोमेंट को, क्योंकि इसी मोमेंट, छोटे छोटे मोमेंट से मिलके पूरी लाइफ बनी है, एंड इट्स अ जर्नी। तो जो आज है, अभी है, इस मोमेंट में है, उसको पूरा करना है अच्छे से, पूरा लिविंग फुली इन दिस मोमेंट। आगे पीछे वो है जो है, फाइन, ठीक है, अभी उसको लेके जब आता है भी दिमाग में तो ठीक है, लेके धीरे धीरे सिर्फ हमें आगे बढ़ते जाना है, इस मोमेंट को लेके जीना है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। Over to Vandana ma'am. Thank you, and I love what Anamika said. Living in the present. Living in the present is so important. ये मोमेंट में आपने अपना काम, अपना प्रेजेंस कंप्लीटली दिखा दिया, आप प्रेजेंट है तो अपने आप आगे का रास्ता मिलने लगता है. It just happens that way. If you live this completely, the next moment will bring the next best possible outcome for you. तो अगर आप यही नहीं है तो आगे का भी रेस छूट गया आपका, ये भी छूट गया, वो भी छूट गया. सो आई से अगर प्रेशर को मैनेज करना है, फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस की प्रेशर कभी जाने वाला नहीं है. पेन विल ऑलवेज एग्जिस्ट अराउंड अस. how we find our how we find those ways in which we can find those bits and happiness around, how we continuously keep looking for it. ढूंढनी पड़ती है ना, ट्रेजर तो ढूंढना पड़ता है हमेशा. कैसे आप ढूंढते रहे वो चीजों को कि खुशी कहाँ मिल रही है, किस चीज से, क्या करने से. बिकम एक्सट्रीमली क्यूरियस, हाउ कैन आई बी हैप्पी एंड हाउ कैन आई शेयर दैट हैप्पीनेस. और if you want to create an identity, but create in that habits, in the habits that will help you identify yourself as a person. मैं ऐसी लड़की हूँ या मैं ऐसा लड़का हूँ जो सुबह उठ के अपना बेड बनाता है. मैं ऐसा इंसान हूँ जो किसी को मदद लगती है तो मैं पहुंच जाता हूँ. मैं ऐसा इंसान हूँ या मैं ऐसी लड़की हूँ जो कोई भी मुसीबत आए तो मैं उसका सामना कर सकती हूँ. ये आइडेंटिटी बनाओ. ये आइडेंटिटी बनाओगे तो किसी भी सिचुएशन में it will help you. So work on creating habits that are going to help you lifelong in your journey. No matter आपकी environment challenges वो तो आते रहेंगे, बदलते रहेंगे हर phase of life में, but आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो और उसके लिए आप इन हैबिट्स के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हो. तो अच्छी हैबिट्स के साथ आइडेंटिफाई करो और some things which just help, which is like feeling gratitude for things that you already have, for things that you have had, and for the things that you're going to have. Just feeling gratitude, expressing that to yourself and to others. और दूसरों की अच्छाई ढूंढने की कोशिश करो. सब में अच्छाई है ही, मतलब इट्स अ गिवन. अच्छाई भी, और बुराई बोलते हैं, बट देयर आर गुड पार्ट्स ऑफ अस, ब्राइट पार्ट्स ऑफ अस, देयर आर डार्क पार्ट्स ऑफ अस, एंड देयर बोथ पार्ट्स ऑफ अस. बट जब आप किसी में कुछ अच्छा देखते हो, उनको बताओ, वो चीज आप नोटिस करवाओ. शायद उन्हें पता नहीं होगी, but the fact that you are doing it just again becomes another habit, that you are looking at the good in others, you are able to appreciate that, verbalize that, share that comes back to you. People will start doing that about you. Maybe आपको भी नहीं नजर आ रहा है. तो in all these ways you will be able to manage no matter what comes in your life. Just ground yourself with good habits, and then certain treasures that you already have. Just कोई money cannot buy it.
like gratitude, courage, determination, commitment, ये सब आपके अंदर है, confidence. Go and chase those buckets. बार बार जाके उनको छुएं, उनको activate करें, energize करें to keep using them no matter when you need that in life. That's what I like to say. संजय सर. मुझे बस यही कहना था क्योंकि आई मे बी द एल्डेस्ट अराउंड, सो मे बी आई कुड गिव सम यूजफुल एडवाइस. The first thing what I said was about the blood pressure. Everybody should remember that pressure is also important and pressure is needed for achieving. Only try and keep it within limits, and don't allow it to go low and don't allow it to go high. Another thing that I would say is that there is a pressure which arises from conflict. Now, when we had a chapter in our MBA on conflict, and we were asked to draw a curve as to what do you feel is the level of production when the conflict rises. For everybody, conflict is a dirty word. हमें लगता है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो यार ये तो फिर बहुत गलत बात है, कॉन्फ्लिक्ट जब होगा तो फिर ये तो बहुत प्रोडक्शन तो एकदम लो हो जाएगा. पर जब कर्व बनाया लेक्चरर ने, मैं इतना सरप्राइज हुआ देख के कि एट लो लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट प्रोडक्शन रेट फॉल्स and then it begins to rise as conflict increases, and then as conflict reaches a certain point, high level, again then the production level falls. मतलब जिंदगी में पहली बार मैंने ऐसा कर्व देखा था जहां पर कॉन्फ्लिक्ट को जरूरी है. इनफैक्ट ये बहुत जरूरी है. अगर सारे लोग ही हाँ करते रहेंगे तो प्रोग्रेस आपकी नहीं होगी बॉस. आपको कोई ना कोई चाहिए, हस्बैंड को वाइफ चाहिए, बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड चाहिए जो उसको परेशान करे और उसको बताए कि भाई ये तुम ठीक नहीं कर रहे, ये तुम इसको बेहतर करो, या कुछ मतलब परेशानी या कोई उसको बताने वाला चाहिए. भाई कॉन्फ्लिक्ट बहुत जरूरी है. ये मत सोचिए कि अगर मेरा स्ट्रेट लाइन हो गया तो मैंने मैक्सिमम अचीव कर लिया. स्ट्रेट लाइन में कई बार नहीं अचीव होता, कर्व में ही अचीव होता है. इनफैक्ट एक्सपोनेंशियल कर्व से ही प्रोग्रेस आती है. तो देयरफॉर कॉन्फ्लिक्ट इज एसेंशियल फॉर लाइफ, एंड ऑल्सो आई वुड से फ्रिक्शन इज एसेंशियल फॉर लाइफ. लोग कहते हैं मुझे फ्रिक्शन नहीं चाहिए. अरे भाई, आप अगर सुबह नहाने जाते हो, जब आपका बाथरूम का फ्लोर गीला होता है, वहां चल के देखो, कैसे चलोगे आप? नहीं चल सकते, आप गिर जाओगे. तब आपको रियलाइज होता है कि यार फ्रिक्शन कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में. तो ये चीजें जो होती हैं, हम सोचते हैं नहीं नहीं यार कुछ कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई फ्रिक्शन ना हो तो मैं बड़ा सही रहूंगा. अरे भाई ऐसा नहीं होता मेरे भाई. आप जब तक कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा आपकी प्रोग्रेस नहीं होगी, और जब तक फ्रिक्शन नहीं होगा आप चल भी नहीं पाओगे, कदम भी नहीं उठा पाओगे मेरे दोस्त. ये आप याद रखिए और चलते रहिए. जैसे अनामिका ने कहा, वंदना ने कहा, ये दोनों बहुत बढ़िया इन्होंने कहा है कि चलते रहो, देखते रहो, चीजें होती रहेंगी, लेकिन रुको मत, चलते रहो. थैंक यू.